Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you're all well. So in this session, we are going to cover all the concepts that you need to know for paper one quadratics. This is about A-level maths. So let's start. So firstly, you need to know of some basics regarding quadratic functions and quadratic equations in, from O-levels. So you have functions like this that have their highest power as 2 are called quadratic functions. Okay, the standard form होती है that looks something like this: ax squared plus bx plus c. You've got a quadratic term, you've got a term in x, and you've got a term in that is a constant. So that's the general form. कभी कभी आपके पास एक term इनमें से या इसमें से missing भी हो सकती है. That's perfectly okay. अच्छा. So the first thing here, y equals something like this. That's called a quadratic polynomial or a function. If you have an equation like this only in one variable, or you said that the zero ho, it's called a quadratic equation. Now, the quadratic equation to solve करने के you need to know about the different methods for this. So firstly, you've got factorization. Factorization, remember, हम क्या करते थे? If we have an equation like this, that's 2x squared plus 5x minus 12. We would multiply 2 and 12. That's 24. क्योंकि यहाँ पे minus sign है, हम देखेंगे कि 24 के कौन से factors हैं जिनको minus करके हमारे पास ये middle term आती हो. That is 5. 24 के क्या factors हो सकते हैं? We have 124, we have 212, we have 3, 8. And then we also can have 24 factors, 4 and 6, and that's it. So these are all the factors that these are all the combinations of the factors of 24 that will give us 24. इनमें से किसी को subtract करके हमारे पास 5 आ सकता है. We have 3 and 8 here, right? So that's why we use minus 3 here plus 8. So middle term को break कर लेते हैं. It's called middle term breaking. So break करके we do factorization, find the values of x like this. Factorization आपको पता होनी चाहिए, which you already know from O levels for solving a quadratic equation. You also need to know about the quadratic formula. So that's given by this: minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. It's also given in the formula sheet. आपके पास ये equation है, for instance 6x squared minus 8x minus 7 equals 0. Generally अगर factorize नहीं कर सकते तो आपके पास जो second go-to method होता है, that is quadratic formula. The first term is the first coefficient is 8. जो x square का coefficient होता है, the coefficient of b is minus 8, the coefficient of c is minus 7 here. The coefficient of x squared is a, the coefficient of x is is b, which is minus 8 in this case, and then the constant is minus c, which we represent by c here. So formula के अंदर आपने values input करनी है. So remember, a is 6, b is minus 8, and c is minus 7. You have to be careful कि आप ये brackets use करें ताकि आपके sign के errors नहीं हो. Whenever you are solving an equation that cannot be solved using factorization, a quadratic formula use कर रहे हो अगर, you have to make sure you show this step. This is very important. इस step के बगैर आपका एक मार्क कट जाएगा अगर आप डायरेक्टली आंसर लिख दोगे. अगर आप कैलकुलेटर यूज करके भी कर रहे हो, आपको ये स्टेप हमेशा जरूर शो करना होता है कि आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में किस तरह से वैल्यूज इनपुट की. मेक श्योर यू डू दैट एंड यू गेट योर रिजल्ट्स फ्रॉम दिस. या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट्स आते हैं. अच्छा, जो सॉल्यूशंस आते हैं आपके पास ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर आप कोई भी पॉलिनोमियल सॉल्व करते हो, सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट क्या कर रहे होते हैं, इसको हम रूट्स भी कहते हैं. Roots of any polynomial basically represent the points where the graph of that function, where the graph of that polynomial intersects the x-axis, right? So this is the x-axis. तो जिन points पे वो x-axis को intersect करता है ना, वो हमारे पास roots होते हैं. ठीक है? Why? Because we've got 0 on the other side. यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक function ये है, दूसरा function is essentially y equals 0. ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को intersect करते हैं? Y equals 0 is the x-axis. तो ये solutions होते हैं इसके, वो क्या represent कर रहे होते हैं? The points where the graph meets the x-axis, point of intersection with the x-axis. ये हमने find किए थे, यहाँ पे आप graphically नजर आ रहे हैं, वो आपको ये points x intercepts basically आपके पास आ रहे हैं. ठीक है, वो represent कर रहे होते हैं. अच्छा, quadratic function का जो graph होता है, how does that look like? It's a curve जिसको हम कहते हैं parabola, and it can be one of these two shapes, either a U shape or an N shape. So if this is the standard form of the equation of the quadratic function, ax squared plus bx plus c, अगर ये a positive है, x squared का coefficient अगर positive है, तो हमारे पास ये U shape होती है, the first one. अगर x squared का coefficient negative है, right, this number here, तो हमारे पास ये N shape होती है, inverted U.
and that has a maximum point. ये maximum point इसके पास इसका एक आ रहा होगा, ठीक है? A पॉजिटिव होगा तो U शेप होगी और मिनिमम पॉइंट होता है हमारे पास एक ये टर्निंग पॉइंट, और अगर A की वैल्यू नेगेटिव है तो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट होता है और ये N शेप ग्राफ होता है. ओके, नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्राफ. तो वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो दरमियान में टर्निंग पॉइंट है ना, जहाँ पे इस पे अगर आप वर्टिकल लाइन बनाओ, दिस ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल ऑन बोथ साइड्स. तो ये जो लाइन है यहाँ पे दरमियान में, दिस इज आल्सो कॉल्ड the line of symmetry, or you can also call this axis of symmetry, right? So ये भी कभी आपको बताना होता है कि line of symmetry क्या है, axis of symmetry क्या है. That is this line in the middle, that will be x equal to something, x equal to whatever the x coordinate of the turning point is, वो आपका line of symmetry होगी यहाँ पे. अच्छा, अब इसमें एक quadratic function के ना दोनों sides पे अब क्या हो रहा था, एक side पे ग्राफ का gradient positive होता है, एक side पे negative होता है. Now depending on which shape this is, for example, if you look at the first shape here, the gradient on the left side is negative. Turning point के left side पे gradient negative है, turning point के right side पे gradient आपको positive है, right? Left side पे gradient negative है, right side पे positive है. Gradient negative होने को हम कहते हैं, जिस function पे gradient negative होता है ना, उसको हम कहते हैं function वो decreasing है, because going from left to right, your function is going down. तो function decrease हो रहा है, उसकी value decrease हो रही है. तो जब भी gradient negative होता है, इसे that's a decreasing function. तो quadratic function ना दोनों होता है, एक साइड पे इंक्रीजिंग होता है, एक साइड पे डिक्रीजिंग होता है. सो अगर आपसे कभी पूछे कि अच्छा for what values of x will this function be increasing or decreasing, तो depending on the shape of the graph आप उसको turning point के एक साइड वाला आप उसको कह दो कि वो इंक्रीजिंग है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके मेरा टर्निंग पॉइंट होता 3 and 4, तो आप वो पूछता है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए दूसरा ग्राफ जो है वो इंक्रीजिंग है. तो ये टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग है, बिकॉज वहां पे ग्रेडियंट इज पॉजिटिव. यू विल से फॉर x less than 3 this graph is increasing, right? Less than 3 or greater than 3 or less than or equal to 3, graph आपका increasing होगा. For x greater than 3 the graph is decreasing. ठीक है, राइट साइड पे 3 के वो decreasing है, लेफ्ट साइड पे increasing. Okay, so that's what you also need to understand from the shape of the graph. अच्छा, अब इसमें आपको ग्राफ में नजर आ रहा होगा turning points. There are some turning points here. उसका maximum point भी कह सकते हैं depending on the shape of the graph. Second one के अंदर वो maximum है, first के अंदर minimum है. How do you find those turning points? अब turning points find करने के भी different methods हैं. One is that you complete the square. Another is use this formula as x equals minus b over 2a. And since you know differentiation as well, डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पे इनपुट कर सकते हैं. गॉट डिफरेंट मेथड्स. कंप्लीटिंग स्क्वायर किस तरह करते हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये है कि आपने अपनी फंक्शन को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, a into x minus h whole square plus k. ये दरमियान में जो है दिस कॉल्ड कंप्लीटेड स्क्वायर. इस फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है. ओके, नाउ व्हाट वाज द इनिशियल फॉर्म? दैट वाज ax square plus bx plus c. दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन. कैसे करते हैं? इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस 2x square minus 4x plus 1, x square के कोएफिशिएंट को सबसे पहले आपने 1 बनाना होता है. तो whatever is the coefficient there including the negative sign, उसको आपने कॉमन ले लेना है. बाहर चला गया पहली दो टर्म्स में से. कांस्टेंट को बेशक आप बाहर रहने दें, उसको अंदर भी रख सकते हैं. योर चॉइस से कॉमन लेना है नहीं लेना, जनरली इट्स इजी अगर उसको बाहर रहने दें. फर्स्ट टू टर्म्स आपने कॉमन ले लिया, तो यू गेट टू कॉमन, राइट? व्हाट आर यू लेफ्ट विद इनसाइड? x square minus 2x. ठीक है, ये आपको अंदर बच गया. फिर क्या करेंगे? तो x का कोएफिशिएंट है ignoring the negative sign, इसको हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, whatever that is. In this case this is 2. 2 को 2 से डिवाइड किया, we get 1. 1 का स्क्वायर ऐड भी करना है यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे माइनस भी करना है. तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो है ना, ये हमारे पास वो फॉर्म बन गई है x स्क्वायर हमारे पास वो फॉर्म बन गई है a स्क्वायर minus 2ab plus b square. Remember that identity, a square minus 2ab plus b square. इसको हम लिख सकते हैं a minus b का होल स्क्वायर. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू हियर. हम क्या करते हैं, ये आपके पास फर्स्ट टर्म होगी ना यहाँ पे, वहां से हमारे पास x आ जाएगा. सेकंड टर्म होगी, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे नीचे प्लस लिखते, राइट? आपके सेकंड टर्म आपको साइन देती है, साइन यहाँ पर आता है सेकंड टर्म से. एंड देन थर्ड टर्म के अंदर जो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू होती है वो भी हम उठा के यहाँ पे लिख लेते हैं. सो दैट वाज 1. वी हैव दैट 1 हियर एज वेल. Okay, so that's x minus 1. तो जब आपने प्लस किया था, कोई चीज आपने माइनस पे की थी, तो बैलेंस आ रहा है, वो बाहर है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ गई. Now what we do is
we multiply this outside to inside, 2 को multiply कर दिया x minus 1 whole square के साथ भी, इस minus 1 के साथ भी, तो overall क्या हुआ, आपके पास ये फॉर्म बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद दिस फॉर्म, हमने ऊपर लिखी थी। इस फॉर्म के अंदर क्या होता है, तो आपके पास ये h है ना, this h here, that is the x coordinate of the turning point, k is the y coordinate of the turning point. Turning points में h और k होता है, आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। So if you have this form here, you compare it with that, इसको कंपेयर करते हो इस फॉर्म के साथ, ओके, एंड यू से यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -h है, -h equals -1, that means h is equal to 1, ओके, h की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू इसी तरह से प्लस k equals -1, k equals -1, टर्निंग पॉइंट अब क्या हो जाएगा, hk, right, this was h and k, h is 1, k is -1, so 1 - 1 is a turning point। अब क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, that's why it's actually a minimum point। ग्राफ आपका U shape है, the turning point is the minimum point, and that's this point here। उसकी line of symmetry क्या होगी, that's x equals 1। This is your turning point, 1 and -1, that's one way to find the turning point, okay। अच्छा, another possibility is you have this formula for this, x equals minus b over 2a। This formula actually comes from the quadratic formula, but you have this thing, this gives you the x coordinate of the turning point। अगर आपको सिर्फ टर्निंग पॉइंट पूछा हो, आप ये भी यूज कर सकते हो। अक्सर उसने कहा होता है कि आपने उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसमें फिर आपको यही करना पड़ेगा, बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट, फॉर दैट यू कैन यूज x equals minus b over 2a। So how do we use this? We have this thing, let's say this is an example that we have, y equals minus 2x squared plus 6x minus 4। How do you find the turning point? x equals minus b over 2a। अब इसमें a क्या है, a is -1, a is -2, so a is -2, b is 6 here, and c is -4। ठीक है, -b over 2a के अंदर क्या किया, हमने वैल्यूज इनपुट की, and we got 1.5। now 1.5 is the x coordinate of the turning point। x coordinate आपके पास आ गया, we'll input this x coordinate back into the original equation, से आपके पास corresponding value of y आ जाएगी। that's what we do here, corresponding value of y आ गई, so y equals 0.5। the turning point therefore for this particular function is going to be 1.5 and 0.5। okay, that's the turning point of this function। यहाँ पे क्योंकि x square का coefficient negative था, ये n shaped graph होएगा looking like this, और इसका एक maximum point होगा। this turning point is basically a maximum, this is a maximum point। ठीक है, और इसकी line of symmetry क्या होगी, again x coordinate जो भी है, x equals 1.5, that is the line of symmetry for this। यहाँ पे जो turning point था हमारा, this was a minimum, right, because यहाँ पे x coordinate was positive। अच्छा, अब completing square के अंदर ना काफी यहाँ पे confusion होती है कि अच्छा यहाँ पे positive के कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे भी -1 थे, -1 था, हमने कहा कि h is 1 पॉजिटिव 1, लेकिन k is -1, राइट। अब क्या करते हो, पूरे को ना इसको इक्वेट कर देते हो, -h को इक्वेट कर दो -1 के साथ, राइट, एंड दैट विल गिव यू द वैल्यू लाइक दैट। तो आप इस तरह समझ सकते हो, जब साइन सेम होंगे पॉजिटिव आएगा। अगर ये माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, माइनस, यहाँ पे उधर माइनस आया, जब सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा, यानी h के साथ सेम साइन थे तो 1 आ गया, k के साथ डिफरेंट k और वहां पे डिफरेंट साइंस है, that's k और -1, तो वहां पे k नेगेटिव आ रहा होता है। so you can have these different options here, 2 into x minus 4 whole square plus 9 for him। अब देखें यहाँ पे -h है, इधर -4 है, सेम साइन, h पॉजिटिव, ये भी सेम साइन, अगेन k is also positive है। ठीक है, what about this other one, 7 +7 है, यहाँ पे ऊपर -h था, h की वैल्यू माइनस आ गई, k जो है बाहर +6, वो 6 आ रहा है। ठीक है, similarly for the third case we've got -5 here। Similarly for the third case we've got -5 here, over -h tha, so those same sign as we've got 5 here, and outside we've got -3 and +k, so that's k is -3 here। ठीक है, so these are the turning points। अब बाहर क्योंकि जब नेगेटिव होएगा तो बस मैक्सिमम पॉइंट होगा, x स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव है तो बाहर पॉजिटिव होएगा तो हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा। ओके, अच्छा, कभी क्या होता है वो आपको स्पेसिफिक फॉर्म दे देता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म, कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, राइट। फॉर इंस्टेंस समथिंग लाइक दिस, 2x plus a whole square minus b। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास जब कंप्लीट स्क्वायर करते थे हम हमेशा सिर्फ x होता था, x के साथ कुछ और नहीं लगा होता था।
यहाँ पे वो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया. What do we do with this? There are two possibilities. One possibility is you use your standard completing square method. ठीक है? Use a standard completing square method. 4x square minus 12x. आपके पास ये है, आपने 4 कॉमन लिया बाहर ताकि x square का कोएफिशिएंट 1 हो जाए. You follow that same process for completing the square. You can see that here. वो कंप्लीट कर लिया. This is the completed square form at this point. ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है. ठीक है? अब उसने क्योंकि कहा था कि अंदर आपके पास 2 होना चाहिए x के साथ. अब क्या करोगे? आप बाहर वाले ये नंबर को देखोगे. We have 4 outside. आप 4 को लिख सकते हो as 2 square. And when you write it like this, 2 square, this is also square and this is also square. हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि पावर सेम है, इन बेसिस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 into x minus 3 over 2, we can multiply these things. हमारे पास आ जाएगा 2 into x minus 3 over 2 whole square of that. And then when we multiply this, we get 2x minus 3 whole square and minus 9 outside. That was coming from before. That's as it is. So this is the form that we were looking for there. Okay, so this is one method. आप completing square method लगाओ और बाद में जो बाहर वाला नंबर है उसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है? That's one possibility. Another possibility is you use that form that is given 2x plus a whole square plus b. उसको आप क्या करो? उसको आप expand कर लो. ठीक है? और फिर आप कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो. So उसको expand करके हमारे पास में ये फॉर्म आ जाती है. ठीक है? इसको हम कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड्स पे. x स्क्वायर के कोएफिशिएंट वो तो 4 और 4 है, उससे कोई फायदा नहीं होएगा. x का कोएफिशिएंट 4a and minus 12, we equate them because they have to be identical, right? 4a equals minus 12, a की वैल्यू minus 3 आ गई. ठीक है? Similarly, constant राइट साइड पे क्या है? a square plus b. लेफ्ट पे कौन सा constant है? 0. कोई भी constant नहीं है. a square plus b, put value of a that we have found here. वहां पे इनपुट की b की वैल्यू आ गई. ठीक है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? जो गिवन फॉर्म थी that was 2x plus a whole square plus b. उसके अंदर a और b की वैल्यूज इनपुट की. This is what you were looking for. So this is another possibility. अब completing square के लिए भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो. But the other one is actually quicker. So I would not recommend it. लेकिन इस तरह के कुछ different form आ जाए that you are not used to, उस केस के अंदर आप क्या करोगे? आप ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स वाला मेथड भी लगा सकते हो लाइक दिस. उसको एक्सपैंड करके स्क्वायर उसको वैल्यूज उस कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो. ओके, देन वी हैव साइमल्टेनियस इक्वेशंस. सो we are used to solving linear simultaneous equations from O levels. लेकिन यहाँ पे अब ये भी हो सकता है कि आपके पास एक इक्वेशन जो है वो लीनियर हो और एक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक हो. What do we do in this case? So we will be able to use substitution here as well. हम सिर्फ क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशंस के अंदर एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेंगे. ठीक है? सो जनरली क्या होगा? जो वेरिएबल की जिस वेरिएबल की टू पावर नहीं होगी ना, जो लीनियर वाला वेरिएबल होगा उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे दोनों के अंदर. जनरली इट्स गोइंग टू बी y, राइट? फॉर एग्जांपल इन दोनों के अंदर y जो है वो लीनियर है, उसकी कोई क्वाड्रेटिक टर्म नहीं आ रही. बट समटाइम्स यू आल्सो हैव दिस के x जो है वो लीनियर होता है दोनों के अंदर और y जो है हो सकता है वो इस तरह कुछ हो. उस केस में आप क्या करोगे? x को कोएफिशिएंट x को सब्जेक्ट बना लोगे दोनों इक्वेशन से और उनको इक्वेट कर दो. राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. जनरली आप y को सब्जेक्ट बनाते हो, कभी-कभी आपको x को बनाना पड़ता है. यू जस्ट मेक द सेम वेरिएबल द सब्जेक्ट इन बोथ इक्वेशंस एंड देन यू जस्ट इक्वेट देम. फॉर एग्जांपल मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया, y equals 9 minus 2x, then just equate 9 minus 2x and x squared plus x minus 10 इनको इक्वेट कर दिया. It gives me this quadratic equation x squared plus 3x minus 19 equals 0. इसको हम स्टैंडर्ड मेथड सॉल्व किया. x की वैल्यूज आ गई, दो x की वैल्यूज जो आई उनको वन बाय वन इनपुट किया इन वन ऑफ दोस ओरिजिनल इक्वेशंस और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर y आ गई. सो वी हैव वन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x and y here 3.12 2.76 and the other set of values of x and y here. अब ये दो सेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? these are the points of intersection of this line and the curve. ठीक है? ये दो पॉइंट्स आपको ग्राफ में नजर आ रहे हैं. we have the curve in green, we have the straight line in red. ये जो points of intersection है उनके वो हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं theoretically. So अगर आपको points of intersection कभी फाइंड करने के लिए कहते हैं, that essentially means that you have to solve those equations simultaneously and that should give you points of intersection. So that's how we solve simultaneous equations. दोनों equations से same subject बनाया, उनको equate कर दिया. Okay? अच्छा. Now nature of roots. So quadratic equations जब आप solve करते हो, there are multiple possibilities. आपके पास तीन different possibilities होती हैं generally. एक तो ये possibility होती है कि बस दो different roots आ जाए.
that we see very often. कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास equal root आ जाए, दोनों root same आ गए. For example, if you have an equation like this, x minus 4 whole square equals 0, right? Or let's say it starts from this, x square minus 8x plus 16 equals 0. That's a quadratic equation. इसके equal roots आते हैं, you get x equals 4, x equals 4, right? Because वो एक perfect square है. So you have this form as well. Then you have real roots, but they are both equal. And the third possibility is आपके पास ना quadratic formula के अंदर square root के अंदर negative आ जाए. Square root के अंदर होता क्या, b square minus 4ac. अगर वो negative आ जाए तो उसका मतलब होता है कि बस कोई real roots नहीं है. ये तीन possibilities होती हैं. तो ये जो हम उसके लिए हम ये यूज करते हैं b square minus 4ac. Where is this coming from? Quadratic formula के अंदर square root के अंदर होता था ना b square minus 4ac. अगर वो b square minus 4ac greater than 0 हो, we have two real and distinct roots. अब two real and distinct roots से क्या मतलब है कि आपके जो points of intersection होंगे वो दो होंगे, right? दो points of intersection होंगे. अगर तो वो simple quadratic equation है, एक single equation है, आप उसको solve कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो x intercepts है उसके वो दो x intercepts है. अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है? b square minus 4ac is equal to 0. In that case, you've got two real and equal roots. Equal roots are repeated roots in that case. ठीक है? What happens in that case? आपका अगर ये simple quadratic equation है तो ये जो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है x axis, right? So it just touches the x axis, and the x axis is basically a tangent to this curve. सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है. That's what it means to have two real and equal roots, right? And then the other possibility is कि b square minus 4ac आपके पास less than 0. That means there are no real roots. अगर graphically देखें तो वो x axis को intersect ही नहीं कर रहा होता. ठीक है? The same thing can apply in case of multiple equations as well. आपके पास एक quadratic है, for example, जिस तरह ऊपर थी, एक straight line है. उस terminology हम क्या कहेंगे? ये वाला केस था जहां पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों. This is the first case. B square minus 4ac is greater than 0. The curve and the line intersect at 2 points. They're intersecting at two different points. ठीक है? जब equal to 0 होगा, उसका मतलब ये होगा कि the line जो है, that is a tangent to the curve, that is only touching the curve at one single point with tangent बन रहा है. ठीक है? जब b square minus 4ac less than 0 होगा, that means the curve and the line that you have, they are not intersecting with each other. उनका कोई point of intersection नहीं है. These are the three cases that you have. So depending on the situation, you may have to use one of these to prove something कि क्या वो दो point पे intersect करते हैं नहीं करते. अगर आप वो कहते हैं कि दो points पे intersect करते हैं, हमें prove करना है, आप b square minus 4ac find करोगे, वो positive आ जाता है तो वो prove हो जाएगा. कभी-कभी आपको बताते हैं कि वो दो points पे intersect करते हैं तो आपने कोई value find करनी होती है. Use this relationship. One of these three relationships, depending on the situation. अगर उसने कहा कि वो line जो है वो tangent है curve के, आप क्या करोगे, उनको equate करके b square minus 4ac को equal to 0 input कर दोगे. And similarly in the other cases. Now let's take this example, another type of question that comes. Sometimes we're asked about something like this, that you have equation of the curve given and you are asked to show that whole of the curve lies above the x-axis, right? अब इसी की कुछ और wording ये भी हो सकती है कि वो कहता है कि show that this expression x square minus 3x plus 4, which is the quadratic expression, it's always positive, no matter the value of x, or you can say it is never negative. So things like this. अब इसमें आपने क्या करना है, आप you think about this expression, x square minus 3x plus 4. First of all, x square का coefficient is positive. That means it's a U-shaped curve, right? Because the coefficient of x square is positive. It's a U-shaped curve. So that's the first thing that you know. Now, how do you show that it lies above the x-axis? Now you know that it's a U-shaped curve. आप क्या कर सकते हो, इसका turning point figure out कर. Turning point using any method. Completing square कर लें, differentiation कर लें, minus b over 2a कर लें, any method that you like. You find the turning point. ठीक है? इसका turning point for, in this case, if I find that using x equals minus b over 2a, I find the x coordinate is the corresponding y coordinate निकाला by inputting that value in the original equation. I get this turning point 1.5 and 1.75. Now think about this. A curve है जो U-shaped है और इसका जो minimum point है that is somewhere here 1.5 and 1.75. So on the vertical axis, y value जो है इस curve की वो minimum है at 1.75. इससे नीचे वो graph आता ही नहीं है.
x axis कब होता है जब when y is equal to 0. अगर minimum value of that expression is 1.75, इसका मतलब है कि it always lies above the x-axis. Since the minimum value is 1.75, which is positive, the whole curve lies above the x-axis. Similarly, it also proves the other things. This thing is always positive because its value minimum 1.75 है, इससे कम तो हो नहीं सकती. That means it's always positive or it's never negative, right? So this is one way to prove things like this. दूसरा method क्या हो सकता है? Since you already know that it's a U-shaped curve, what you can do is you can find the discriminant of this expression. B square minus 4ac figure out कर सकते हो. B square minus 4ac in this particular case turns out to be now in this case, since the discriminant is negative, it means this curve does not intersect the x-axis. ठीक है? आपको पता है कि ये U-shape है and it never intersects the x-axis. X-axis को intersect नहीं करती because the b square minus 4ac is negative. Now it's not possible कि वो curve x-axis के नीचे हो, because अगर x-axis ऊपर है और curve की shape u है तो कभी ना कभी तो ये आके ऊपर intersect कर जाएगी x-axis को. So that means these two things together mean क्योंकि curve की shape u shape है and at the same time the discriminant is negative, उसका मतलब है कि it does not intersect the x-axis. Both of these things together mean that it lies above the x-axis. तो आप दूसरा तरीका ये हो सकता है, आप ये बताओ उसको कि it's a U-shape and it does not intersect the x-axis. That's why it lies above the x-axis, or that it's always positive, or that it's never negative. Okay. The other way around could be कि वो कहता है कि something lies completely below x-axis, या वो कहते हैं it's always negative, it's never positive. The opposite of that, right? You do similar thing here. But now it's the opposite. Since the coefficient of x square is negative here, it could have a maximum value. It's a maximum point है, ठीक है? Turning point figure out कर लो, maximum क्या है? इस case के अंदर मैंने वो निकाला. It turns out to be minus 3.5. Now, since the turning point, the maximum point is minus 3.5, इसका मतलब है इस point से ऊपर तो कभी आती नहीं है curve. Minus 3.5 से ऊपर, क्योंकि इस point से ऊपर नहीं आती. Maximum point is minus 3.5. Which is negative. That means the whole curve lies below x-axis. वो ऊपर वाली साइड पे जा नहीं सकती. N shape है ना, और इसका maximum point ये है, इससे ऊपर नहीं जा सकती. That's one possibility. दूसरा method वही, you know that this is an N-shaped curve, and you also find the b square minus 4ac. आप इसका b square minus 4ac figure out करोगे, वो negative आएगा. You say, since the curve has an N shape and it does not intersect the x-axis, that means the only possibility is it lies below the x-axis. ऊपर तो हो नहीं सकती, because ऊपर होती तो कभी ना कभी वो x-axis को intersect कर जाती. So it has to lie below the x-axis. This is the other possibility, another way to show that a curve lies below the x-axis, or that it's always negative, or that it's never positive. Okay. अच्छा. Then we have quadratic inequalities. Quadratic inequalities किस तरह solve करते हैं? We already know how to solve quadratic equations. Quadratic equations आपको क्या देती हैं? They give you values at which a curve intersects the x-axis. अगर आपको ये equation होती है x square plus kx minus 10 equals 0, तो solve करते हुए two equations, two values of x equals minus 5 and x equals 2. क्या मतलब है इसका? Equal to 0 था ना यहाँ पे. Equal to 0 का मतलब है कब वो x-axis को काट करती हैं, जहाँ पे y की value 0 होती है. When is that whole thing equal to 0? अगर ये equal to 0 को बजाय यहाँ पे greater than 0 कर दें, what would happen in that case? अभी देखिए curve आपके पास, it's a U-shaped curve, right? Because x square का coefficient आपका positive है, it's a U-shaped curve. Cut-off points here, the points where the graph cuts the x-axis, they are minus 5 and 2. अब ये 0 से बड़ी कब है? ये जो expression है, ये 0 से बड़ा कब है? 0 से बड़ा ये है इस region के अंदर, left side के ऊपर, ये x-axis के ऊपर है और right side पे x-axis के ऊपर है. So if you have to solve this inequality, this whole thing is greater than 0. तो जो कट ऑफ पॉइंट्स है आपके पास, उनके दोनों साइड्स वाले रीजन आ जाएंगे. एक या तो x लेस देन -5 हो सकता है, या वो 2 से बड़ा हो सकता है, 2 के राइट साइड पे हो सकता है, -5 के लेफ्ट साइड पे और 2 के राइट साइड पे. ये दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई एक हो सकती है. ठीक है. अगर ये लेस देन साइन होता, व्हाट हैपेंस इन दैट केस? कब आपकी कर्व जो है बिलो द एक्स एक्सिस है, उसकी वैल्यू 0 से कम है. That's this region. This is the region where the curve is below the x-axis. वो रीजन क्या है? -5 और 2 के दरमियान में. उसको आप ऐसा क्लोज्ड इंटरवल इस तरह शो करते हो. जो छोटी वैल्यू है लेफ्ट पे, जो बड़ी वैल्यू है राइट पे, उनके दरमियान में x हो सकता है.
ठीक है. So x is between -5 and 2. That's what happens when you have this less than sign here. तो अच्छा, अगर बस इस तरह का केस होता -x² + x greater than -2, we have an inequality like this. इसमें आपको करना सबसे पहले क्या है, everything to left side x² के कोएफिशिएंट को हमने पहले पॉजिटिव कर लेना है. ठीक है. वो पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे. व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव साइन, एनी इनइक्वालिटी इफ यू मल्टीप्लाई दैट बाय नेगेटिव साइन, उसका साइन रिवर्स हो जाता है. तो दिस इज व्हाट यू हैव नाउ. तो आपने पहले कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म के अंदर such that everything is on the left side और x² का coefficient जो है that is also positive. And once you've converted to this form, then the rest is exactly the same as before. You find the cutoff points, आप उसको as an equation treat कर लो. x² - x - 2 equal to 0. उसके कौन से roots आते हैं? You get these two roots, -1 and 2. -1 and 2, this is the point where the graph cuts the x-axis. You are looking for the region when this is less than 0. Less than 0 क्या मतलब है? You are between those 2 points. तो -1 and 2 के दरम्यान. ठीक है. So what is the standard method? जो भी आपके पास inequality है, take all terms to the left side. अगर वो already left side पे नहीं है, coefficient of x² को positive करना है. अगर वो already positive नहीं है, you have to make sure that is positive. उसको positive कर दे. Once you have done this, उसके बाद आप देखें कट ऑफ पॉइंट्स फिगर आउट कर लें यूजिंग फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. नॉर्मली फैक्टराइजेशन से हो जाते हैं सारे, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. आप कट ऑफ पॉइंट्स फिगर आउट कर लें. ठीक है. जब वो फिगर आउट कर लिए, आप ये इनइक्वालिटी के साइन यूज करेंगे. इनइक्वालिटी के वो वाले साइन जब आपने ऑलरेडी उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया है कि सब कुछ लेफ्ट पे है और x² का कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है. उसके बाद जो इनइक्वालिटी का साइन है वो आप देखोगे. अगर लेस देन साइन आ रहा हो, अब कट ऑफ पॉइंट्स के दरमियान वाली वैल्यूज यूज करते हो. अगर ग्रेटर देन साइन आ रहा हो, आप कट ऑफ पॉइंट्स के साइड्स वाली वैल्यू यूज करते हो, क्योंकि साइड्स के ऊपर वो कर्व ऊपर होती है, उसका ग्रेटर देन 0 होती है. राइट. दैट्स हाउ यू सॉल्व इनइक्वालिटीज. अच्छा, then you have another type of question that comes, that when you have an equation in x that is not exactly quadratic, लेकिन उसके जो powers हैं that they are in the ratio 2:1. वो 2:1 के अंदर हैं उनकी जो powers, right? For instance, in this case, x की powers are 4 and 2. They're in the ratio 2:1. इस तरह के equations को आप as quadratic treat कर सकते हो. What you do is, जो भी छोटी power है उसको आपने एक नया वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे m यूज कर लिया. लेट m इक्वल्स x². अगर m x² है तो x raised to power 4 क्या होगा? दैट विल बी m². मैं इक्वेशन को कन्वर्ट कर लूंगा क्वाड्रेटिक के अंदर. आई कैन सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मुझे m की वैल्यूज मिलेगी. जब m की वैल्यूज मिल जाएंगी उनको मैं वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा. m की जगह x² डाल दूंगा. मेरे पास आ जाएगा x² = -1, x² = 2. अब मैं x की वैल्यूज फिगर आउट कर लूंगा यहाँ से. सो x² = -1 तो पॉसिबल नहीं है. x² = 2 से दो वैल्यूज आ जाती है मेरे पास, लाइक दिस. ठीक है. सिमिलरली इफ यू हैड something like this, again it's not a quadratic equation, लेकिन इसमें जो x की पावर है they are in the ratio 2:1, because यहाँ पे जो x की पावर है that is 1, इधर तो x की पावर is 1/2. तो the ratio is 2:1, right? 2:1 या 1:2 उस रेशियो के अंदर आ रहे हैं. छोटी पावर को आपने क्या करना है, उसको यूज कर लेना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी और वेरिएबल से. Let m is equal to square root of x, then m² is equal to x. That becomes the quadratic equation like this. उस quadratic equation को सॉल्व किया, m की वैल्यूज आ गई, फिर एंड पे जाके m को वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, m की जगह square root of x डाल दिया, and you find the values of x from there by squaring both sides. x की वैल्यूज आ गई. ठीक है. अच्छा, finally we have so this is a recent question that was interesting and slightly complicated. So we have this equation of a curve that is given by this 2x² plus m into 2x plus 1, where m is a constant and the equation of a line is y equals 6x plus 4. So we have a curve and we have a line. We have to show that for all values of m, the line intersects the curve at 2 distinct points. Now remember your discriminant rule. 2 points पे intersect का मतलब होता था b² - 4ac is greater than 0. हमें शो क्या करना है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m the discriminant is greater than 0 for all values of m. So let's follow the process. What do? How do we solve simultaneous equations? We just equate them. दोनों में y already subject बना हुआ है. Y is subject here, y is also subject here. We just equate them. We say 2x² plus this whole thing is equal to 6x plus 4. इसको हमने सिंप्लीफाई किया, कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म के अंदर ax² plus bx plus c. x² के कोएफिशिएंट अलग कर लिया, x का कोएफिशिएंट अलग कर लिया और कांस्टेंट अलग कर लिया. ठीक है. सो
this is your A, this is your B, and this is your C. ये आपके पास A, B और C के वैल्यूज है. आपने अब क्या करना है, b² - 4ac फिगर आउट करना है, वो हमने प्रूव करना है कि वो ग्रेटर देन 0 इसी तरह से. दैट्स ग्रेटर देन 0 नो मैटर व्हाट द वैल्यू ऑफ m is, सारी वैल्यूज फॉर m के लिए. So let's find b² - 4ac. b² - 4ac हमने यहाँ पे इसमें वैल्यूज इनपुट की. We simplify that. एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे m कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाता, एंड दैट वुड हैव बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, we get this expression 4m² - 32m + 68. हमें ये शो करना है कि किसी तरह से this is positive. This is always positive. Now this is exactly that case हमने ऊपर भी डिस्कस किया है. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है. It's going to be a U-shape because the coefficient of this quadratic वाली term is positive. It's going to be a U-shape. इसकी कोई minimum value होगी. इसको हमेशा positive show करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो minimum value figure out कर सकते हैं. We can use any method for finding that minimum value. For example, हम इसको अगर square complete कर लें, square complete किया मैंने यहाँ पे, square complete करके I get something like this. So this 4 here is my minimum value. Turning point मेरे पास क्या आता है, completed square form से 4 and 4. The minimum value of this expression turns out to be 4. Now, since the minimum value of this expression is 4, that means it's always positive. 0 से तो हमेशा बड़ी है. In fact, 4 या उससे ज़्यादा है हमेशा. So that means ये जो मेरे पास ये पूरा expression था, जो क्या represent कर रहा था, it's representing b² - 4ac. b² - 4ac is always greater than 0. क्योंकि ये पूरा जो है वो expression जो है वो हमेशा x-axis के ऊपर है. That's always positive. Since that is always positive, that implies that the line intersects the curve at 2 distinct points. So that's how you could show that. Okay, thank you for watching this, everyone. Until the end, if you have any questions, you can post them in the comment box below. If you have any recommendations for the next videos, you can also post them before. I am recording some more checklist videos. You can find some links in the description as well. I'll be uploading some more in the next few days. So if you like this, I hope the others will be useful for you as well. Thank you. I'll see you again in another video. Allah Hafiz.